1, 2, 3, chat. Happy birthday. Happy birthday, Mummy. May God thank you. Actually, this is a very emotional moment for me. I simply adore you for being with me and being more wiser than me. And you help me in taking all the decisions of life by staying strong right besides me. And I'm thankful to God that He chose you for me to take all the toughest decisions of life. And you not only take good care of me, but also my two precious jewels of life, my two kids. I know that our kids will one day be good and better human beings because they are getting all the sanskars from you. I love you and I simply adore you. Happy birthday. Hi Akka, many happy returns of the day. हांव खरें मस्त ब्लेस्ड की अशी भयण म्हाका मेळ्ळा लायफान. हांव जेन्ना बी कसन डावट उरले, जेन्ना बी कसन डिफिकल्टीज आयले लायफा, हांव तुका विचारता. तूं म्हाका बरें गायडन्स दिता. दॅट हॅज हेल्प मी इन माय लायफ. पूरा लोग तुक छोटी मम्मी आपयता. इंडीड यू आर अ छोटी मम्मी फॉर ऑल ऑफ अस. आफ्टर मम्मी तूच आसा आमगेले जे पुरा घरा सांबाळता, पुरा लोकां पळयता, पुरा लोकां तुका आवड गोत आसा. तूं जशी अयान शद्रिता सांबाळता, पुरा लोकां गोतस की अयांश इतले मस्ती करता, पण तूं जशी तेका सांबाळता, दॅट्स रियली कमेंडेबल आका. थँक यू फॉर ऑलवेज बींग देर फॉर मी, फॉर आवर फॅमिली. तू पुरा लोकां समजून घेता, पुरा लोकां आवड ना आवड गोतच तुका. अँड तू कसन त्रास बी जाले तरी बी तू लोकल पळयता आनी लोकां खातीर करता. हे खरें तुगेले एक क्वॉलिटी जे म्हाका आय ट्राय टू इम्बायब इन माय सेल्फ. थँक यू फॉर ऑलवेज बींग देर फॉर मी. थँक यू आका. हॅपी बर्थडे. मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे आमो. तुगेले अमके चली जावच्याक भारी नशिबान जावका. चली तर पुरा लोकां जाता, पण तुगेले अमके चली जावच्याक हांव खंयची जल्माक पुण्यकल उरच्या पुरो की तूं म्हाका जल्मा चल्ली आयली. एक आमगेले उतरां भायर ना तूं, आनी पुरो लोकांले त्रास तूं सहन करता, पण तूं त्रास दाखयना की बाबा म्हाका त्रास जाता म्हूण. आनी तूं जायत दोन म्हाका लकी जाल्या. पप्पा बरें काम मेळ्ळें, हें मेळ्ळें. अमयाचन कोण सांबाळता, चेडू हो सांबाळता. आजकाल तर चली कोणें सांबाळनात तशी. 21 वर्सां पाप सांगलें लग्न केलें तुवें. कसने हांव म्हणील उतरां तूं भायर ना, आनी मम्मी पप्पा म्हळें जीव तुका. कसने तूं तुगेले मना ना जाल्यार बी आमी म्हणलें म्हणटा. कसलें तूं हें केलें. तुगेले अमके चली जावच्याक हांव खरें मस्त पुण्य करच्या पुरो. विशिंग अ वेरी हॅपी बर्थडे टू यू. हांव एक सिक्रेट एडमीट करता की ज्या टायमार तूं बॉर्न जाल्ली 4 जानेवारी 1993 तर पुरा लोकांन म्हणिल्लें अरे चली जाला. हांव वरी म्हणिल्लें चली जाला. पण आतां म्हाका रियलायज जाता आसा फ्रॉम द डे यू बॉर्न टील टुडे, यू नो, म्हाका आतां रियलायज जाता आसा की तूं सगळ्या लोकांक रॉंग प्रूव केलें. तर म्हळ्यार तूं इतले रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन काम करता आसा. तुगेलें तें अनकंडिशनल लव आमकां दिता आसा. तुगेले आतां जे यंग एजा भितर लग्न जाले नंतर तूं जे तुगेले बामणा मोग करता आसा, तुगेले चेडवांक पळयता आसा, एक बायल मनीस जावन तूं सगळं रोल करता आसा आनी पुरा लोकांले कॉन्फिडन्स तूं मन जिंकत आसा. तें म्हाका खूब म्हळ्यार आवडटा आसा. आनी तूं म्हळ्यार आमकां इतलें म्हळ्यार अनकंडिशनल लव दिता आसा आनी ते रिस्पॉन्सिबिलिटी तूं करता आसा तातूंत तूं म्हाका खरें म्हाका इतलें प्रावड फिलींग जाता आसा एज अ फादर म्हणून. आनी म्हाका इतलें हें जाता की तूं म्हगेली धूव जावन आसा. म्हळ्यार आय एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. रियली आय मस्ट एप्रिशिएट दॅट द वे यू आर हँडलिंग ऑल द ड्युटीज अलोन. अँड म्हळ्यार तुका कसं सांगू आतां
की हांव तर ते श्रवण बळारी स्टोरी सानपण आयकली, पण यू आर, आय मस्ट से यू आर द लेडी श्रवण बाळ फॉर अस. पुरा लोकां सांबाळून घेवन वचचें, पुरा लोकां केअर करचें आणि पुरा लोकां काळजी करची आणि अनकंडिशनल लव पुरा लोकांक दिवचें. तांचो कसलोय स्वार्थ उरना तुगेले बिहेवियरा बद्दल. हें म्हाका खूब 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 मना पासून आवडटा. तूं अशीच तूं कायम खूश राहा आणि तुगेलें हेल्थ सांबाळो, पुरा लोकांक घेवन तूं समज चलो आणि जिवना भितर तुका प्रत्येक जिवना भितर सक्सेस मेळो हो हांव तुका आशिर्वाद दिता नेहा. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू. हाय नेहा, आज तुगेल बर्थडे. मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू. कसं सांगू हांव तुका, कशी दिवस वता काही कळना. तुका पळयले दिवस म्हाका उडगासस. ताका वरी 7 वर्स जाली. मातशें मेमोरेबल दिवस म्हणजे तूं जे नयांश आमगेलो जाल्लो आनी आमकां कमेंट मेळ्ळें बाबू जाल्ला म्हणून. त्या दिवस तुगेल्यान मेगेले बामणालान तूं इतली खूश आशिल्ली की हांव तुका सांगूंक शकना. ताजे नंतर तूं एक लायक हावस आसा, एक बायल आसा, एक चेल्ली आसा आनी एक सून आसा. तूं पुरा लोकांले कॅर घेता, पुरा जाणां जाय तशी वागता, पुरा जाणांक कशी खूश मेळटली म्हूण तें पळयता. हे तुगेले गूण आमकां मस्त आवडटा. आनी कसो सांगू देवा तुका, तूं अशी खुशींत राब. तुमी लोक दोग जाण खुशींत उरल्यारी आमी दोग जाण खुशींत उरताची. देव तुका अशी आयुश्य आरोग्य दिवो हें मेगेल देवाल्या प्रार्थना आसा. सगळ्या जगान जितले काही खूश आसा ती तुमकां दोग जाणां मेळो. तुमगेले चेडवांक आयुश्य आरोग्य देव दिवो हीच मेगेली आनी तुगेले बाप्पाली प्रार्थना आसा. गॉड ब्लेस यू. स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड विथ लव यू. टेक केअर. बाय. Hi Neha, happy birthday. God bless you. My blessing always you and your family. Take care. Hi Neha, a very happy birthday to you. I hope you are having a great time with your family and I hope you're liking everybody's messages for you. तुगेल सांगची म्हळ्यारी I think you are an amazing mother, an amazing wife आणि तुगेलान इतल अंडरस्टँडिंग आसा टुवर्ड्स एवरीथिंग. द वे यू लुक आफ्टर युअर मॉम डॅड आणि तुगेल घरान तू कशी वटू चलोवन व्हरता. आय थिंक यू आर अ ग्रेट एक्झाम्पल. I hope you have a very fun-filled year and everything that you wish for, you achieve it in your life. हाय नेहा, हॅपी बर्थडे देव. तुगेल बद्दल सांगचे म्हळ्यार तूं सानपणी दोन हांव तुका पळयत रत्ना. तूं अगदी मायस्त, थंड स्वभावाची, कसले त्रास ना. म्हाका पयलीं दोन तुगेल कसले त्रास दिले ना तुवें, कसले हर्ट ना, हें ना. आनी निर्णयान म्हणल्या म्हण की यू आर द बेस्ट मदर, डॉटर अँड सिस्टर ऑल्सो. प्रत्येक लोकांक तूं चंद कोण पळोवन घेता, कशी तांकां जाय तशें वागता तूं रत्ना. सो आनी हावस बाबसून उतरा भायर ना. हावस बाबसून कसन सांगिल्लें वय म्हणटाची. आतांच हें ना तुका मॉडलेज म्हळ्यार तशें न्ही, चंद कोण आस देवा तूं. सो आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ यू देव. वन्स अगेन हॅपी बर्थडे देव. Happy birthday Neha. बाय देव. Bye bye. Hi Neha, wish you many many happy returns of the day. I hope you are having a great time. What do I say about you? I have so many memories of us together. One of my fondest memories will always be, all of you visiting Dharwad every summer and us playing different games, Lagori, Antakshari, or whether it is the trivia quiz. And it sort of helped in creating, very strong bonds. And I hope that we meet again and, relive all those memories. What do I say about you? You have donned so many roles in your life. You are an amazing daughter, a lovely sister, a great wife, and an even better mother to two most handsome and cutest boys. So no matter whatever responsibility you take up, you always ensure that you give it your best, and you're a standing example of how to do all your duties. So yeah, I hope that this new year of your life also brings you a lot of happiness and prosperity. Wish you many many happy returns of the day Neha. I hope this year brings happiness and health to you. Wish you a great year ahead. आमी आमगेली मेमरी सांगची म्हळ्यार मस्त क्रिएट केला आमी.
कारण तो लायक मेमरी याच म्हाका मस्त उरगास की आमी 3 घंटा पत्ते खेळटा बसलेली एंड आय होप यू ऑल्सो रिमेंबर दॅट अशें आमी मस्त मेमरीज क्रिएट केल्या आनी मुखार बी आमी अशी मस्त मेमरीज क्रिएट करुया आनी होपफुली वील मीट सून आय मिस यू सो मच लव यू लॉट्स टेक केअर हॅपी बर्थडे नेहा Hi Neha, a very happy birthday to you. God bless you. Very happy to have you as a part of our family. Have a magical day today, okay? Hi Neha. Wish you a very joyous, fun-filled, happy birthday. Today I would like to share my first impression of you. To me, you came across as a very self-assured, confident girl. You are one of those people whom you would gel with easily because of your exuberance, warm exuberance, and friendly nature. But what I like the most about you is your unpretentiousness. Be the same likable self. Always love you. And if I were to recollect a memorable moment or time spent with you, it would be the time I, Bharti and Sujita visited you in Baroda when you were a newlywed couple. You had prepared yummy pav bhaji for us. And it was commendable and a praiseworthy effort because you're new to cooking and you had made efforts to bond with us and make us comfortable in your home. There are many such incidents when we had fun together, bonded. Looking forward to more such happy moments together. So enjoy your special day. Bye bye. Hello, Neha. Happy birthday to the most enthusiastic and lively girl. From the time you have been married into our family, I have always felt very close to you. Okay. So, most happy wala birthday to you, and God bless, and may you have a happy and a healthy life always. Thank you. Hi. So, तेरे पति ने बोला है 3 क्वेश्चन का आंसर देना. What was your first impression of Neha when you met her for the first time? अब इतना बचपन का तो मेरे को याद नहीं है. बट सेकंड क्वेश्चन के लिए मेरे पास मल्टीपल आंसर्स है. What is your fondest memory of Neha? Oh my God, we have so many memories, yaar. I mean, my childhood is filled with memories with Neha. जो हम डोनेशन कलेक्ट करते थे, जो हम बस में जाके 1 रुपए की टिकट कटवाते थे छोटे बच्चों से, एंड
Oh my god, filled with memories यार. The first time we went to MacD, उसके बाद हमारा डांस एंड गरबा एंड जो हम हमारे फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस के फोटोज काटते थे, न्यूज़पेपर रद्दी वाले के पास जाके पूछते थे कि ये वाला हमें एक पेपर दे दो, इससे हमें इनका फोटो काटना है, और हमारे पास रखते थे हमारे फेवरेट एक्ट्रेसेस का फोटो. आई मीन माई चाइल्डहुड इज फिल्ड विथ memories with Neha and all fond memories, and I simply wish ke you stay the same, okay, and I wish I was with you and we could do as crazy things as we used to do when we were kids. Oh my god. And have a great birthday, or I want to see you soon. Have a blast. Bye bye. Happy birthday. Hello Neha, wish you a very happy birthday. My first impression when I met you was that ಈ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಂತ ಚೆಲ್ಲಿ ಆನಮ್ಮಲಿ, and I know that you are really going to be a Budant mother, a very good wife, and a very good human being. So all the very best to you, and have a very wonderful and a very safe birthday. Love to the boys. Good luck. Hi Neha. Hi Amya bhai. Sorry for the late video. मैं और नेहा हम लोग फर्स्ट टाइम कैंटीन में मिले थे अमृता के थ्रू. मैं, अमृता, चिक्सी, शमीला, हम लोग सब कैंटीन में ही मिले थे, और ज़्यादातर हम लोग बायोटेक डिपार्टमेंट में भी मिलते थे. हम लोग का फ्री टाइम होता था, हम वहाँ पर बैठते थे सब लोग. इस तरह से नेहा से मेरी फ्रेंडशिप हो गई है. और मेमोरेबल नेहा के साथ तो मेरा मेमोरेबल इंसिडेंट यही है, जब नेहा ने हम लोग की शादी का कार्ड दिया था, तो मैंने कहा इतनी जल्दी शादी. तो उसने कहा हाँ यार. मम्मा ने कहा कि लड़का अच्छा है, मम्मा ने लड़का दिखाया, मुझे अच्छा लगा. मैंने बोला ठीक है शादी कर लेते, कभी ना कभी तो करना ही है. तो उसको मुझे बड़ी हंसी आई, यार नेहा अपनी शादी की एल्बम तो शेयर कर यार, हम लोग तो होंगे तेरे फ़ोटो में. हाँ, उस दिन मैं अपना बायोकेमिकल का प्रैक्टिकल छोड़कर आई थी तेरे लिए, और मैम ने दूसरे दिन मुझे बहुत पनिशमेंट दिया था. और बच्चों कैसे हैं सब लोग? नेहा, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. ऑलवेज गॉड ब्लेस यू. जियो हज़ारों साल. बस. Hi Neha, wishing you a very happy birthday. Lots of love, lots of best wishes, happiness, joy, success. I remember when I first saw you, of course पहले से ही हम पहचानते थे in our FY and SY, but जब देखा था नेहा शानबाग, oh my god, very studious, बहुत पढ़ाकू टाइप की लड़की है. But eventually जब TY में we got together and साथ में जब enjoy करना, मैंने सोचा oh god, this girl is a roller coaster ride. Of course TY was like would have been totally incomplete without you. I still remember we were a team. तू और मैं, हम दो जन टीम थे, बाकी रेस्ट ऑफ द TY was different of course. So we were a team, and what a blast we had, whether it is Ranthambore, whether it was Ranthambore or some other trips and trails which we did together. It was so amazing. I would cherish all those moments for my entire life, and definitely I would cherish a friend like you. You're like friends like you are like once in a lifetime type, जो इतने jovial और इतने enthusiasm से भरे हुए होते हैं. You're always up for pictures, जो मैं कभी भी ready नहीं होती हूँ for your selfies and pouts and everything. I'm very bad at it, and but what amazing time we had spent together, and I'm looking forward to many more days like that where we'll spend it together. Maybe ऐसे लंबे ट्रिप्स नहीं, बट हम ऑफकोर्स शॉर्ट मीटिंग्स रख सकते हैं, मिल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. मे यू हैव अ अमेजिंग बर्थडे विथ योर
kids, husband, your mama, dada, your brother, everyone, and of course all your friends. Your party is pending, so maybe let's catch up soon sometime to celebrate your birthday. And lots of love to you. Best wishes always, and be happy, be jovial, be filled with a lot of enthusiasm all your life. Lots of love and happy birthday. Hi Neha, how are you? Hope you're having a wonderful year. So my first impression of Neha when I saw her was we were in MT and she was very confident, very cheerful and very bubbly, I would say, very confident. And the most memorable incident or a good memory I would say is having biryani for lunch, like forever till the time we were in MT. Like biryani was a go-to forever. And lastly, wish you a many happy returns of the day. Hope you have a wonderful year and life ahead. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Neha, happy birthday to you. May God bless you, may God bless you. Happy birthday dear Neha, happy birthday to you. Happy birthday my dear friend Nehu. It feels so good to share my feelings about you today on your special day. All thanks to Jiju that he has planned such a beautiful surprise for you. Well, I still remember the day when we had first met, and the first impression that came on my mind was that wow, she has a good personality and she has a dimple too on her cheeks. I wish I had it too. Those 3 years of Bhavan's college has given me a friend like you, my dear friend, and it's still everlasting. And I just pray that it goes on and on. Those memories we made in span of 3 years are like wow. One of those memories I would like to share where we used to just enter in any of the vacant classrooms and we used to dance on those item songs, and you guys used to enjoy it so much. You were so good at bargaining. I'm sorry. You had that skill in you and you used to give us those bargaining tips while shopping. Wow. I just wish one thing, that if we would be able to give you those birthday bombs back again in front of your kids, so that even they watch you having those birthday bombs on your back and they enjoy it a lot. Lastly, I wish you a very happy birthday, my dear friend, and I wish and I pray to God that He blesses you with abundant health, wealth, and prosperity, and most importantly, that you keep smiling so that we get to see that dimple on your cheek. Love you loads. Happy birthday. Hi Neha, wishing you a very happy birthday, and I really love you. I really miss you. I know we don't talk that much, but still, you're still my tum tum. Take care. Hi Neha. First of all, I wish you a very happy birthday. Now, coming to the point, let me answer some of the questions Ameya has asked me about you. The first one is impression of Neha in your mind. When I first saw you, I felt that you are very egoistic. Then I came to know that you are a very free-minded girl who mingles very easily with everyone. And the second one is most memorable incident with Neha. I have many memorable incident, but the most memorable is when we all went to the Wilmidi beach, which is near our home, Bhatkal. Hope you remember this, Neha. And lastly, your wishes and blessings for our birthday. Many happy returns of the day to you, dear. God bless you always. May you get all the happiness in the world. At last, I would like to say you that you are very lucky to get a very good husband like Ameya. Be happy always. All my love to the cutie pies. Bye bye. Take care. Hey, hi Neha. Hello Neha. So it's a special day, and to tell you, the first time I met you, you were smart and bold, and it's very true, you are smart and bold. And so for your special day, happy birthday Neha. Happy birthday Neha. Have a smiling year ahead. Enjoy the day. Hi Neha. Happy birthday.
I love you. I miss you. My first impression of you is when we met in Bhavan's college. You were the most jolliest and the loveliest person there. So our friendship was meant to be. The memory. I mean, every time that we have spent together was memorable. I cannot name the best. I mean, whether it was O2, whether it was a sari day, or whether it was going to Silvassa together. I think we have spent best time together. I really wish that you have a brightest future. You already have an amazing husband and kids. Hope you get the best of both the world. And I really miss you. Happy birthday, dear. Have a great day. Happy birthday, Neha. Have fun. May all your dreams come true. Wish you very, very happy birthday. हेलो नेहा, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आई थिंक हम शायद फर्स्ट टाइम अपने सोसाइटी के गार्डन में ही मिले थे और उसके बाद हम सबका ही ग्रुप और फ्रेंडशिप अच्छी हो गई। वी रियली मिस यू यार। आप है ना हमेशा एकदम प्रॉम्प्ट आइडियाज़ देते थे कि चलो लेट्स गो, ये करते हैं, चलो करते हैं ना, बाद में कब टाइम मिलेगा। आई रियली मिस दिस थिंग्स। आई विश यू रियली वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अपने दोनों बेबीज़ के साथ खूब एंजॉय करो। एंड आई विश वॉट एवर यू एवर ड्रीम्ड ऑफ इन योर लाइफ, आई विश ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय। जॉय। हाँ, जब मैं फर्स्ट टाइम उनको मिला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक ऐसी लड़की जो अपने करियर के लिए इतना मतलब टाइम देने के लिए बहुत एग्रेसिव थी और वो अपने करियर को बनाना चाहते थे। इवन उनके पास एक छोटा बेबी था, फिर भी उस बेबी को मैनेज करते हुए उनको ये फ़ोन था कि मैं कैसे भी करके मुझे इस कोर्स को सीखना है और आगे बढ़ना है। सो जब वो फर्स्ट टाइम आए थे कोर्स करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन मार्केटिंग का, तो वो उस टाइम पे दोनों चीज़ें मैनेज करते थे, बेबी को भी संभालना प्लस उनकी मम्मी का भी उनको सपोर्ट मिलता था और प्लस वो इस तरह से हैंडल करते थे। तो वो चीज़ें देख के लगती थी हाँ यार, ये अपने करियर्स के लिए बहुत डिवोटिव है और वो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपने करियर के बारे में इतना फोकस करते हैं। ये फर्स्ट इंप्रेशन उनका बहुत अच्छा था मुझे कि वो अपने करियर के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो सही में टैलेंटेड है, वो कर सकती है कुछ भी अपने लाइफ में। और सबसे अच्छा इंसिडेंट वही है कि जब वो अपने चीज़ों के लिए हमेशा जो मोटिवेट होके कुछ ना कुछ ट्राई करते थे, हाँ मुझे ये करना है, ऐसे कर लेना है। मेरा मेन यही है कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही रहे, है ना। और वो अपने लाइफ में तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो इतने टैलेंटेड है, वो अपने लाइफ में कुछ भी डिसाइड करेंगे तो वो उसको अचीव कर सकते हैं, ये 100% है। सो मैं उनको वही बोलूँगा कि वो अपने लाइफ में गोल डिसाइड कर ले क्या करना है उनको, और वो गोल को वो कैसे भी करके अचीव कर सकते हैं। ये टैलेंट और वो कैपेबिलिटी उनको गॉड ने दिया हुआ है और ऑलरेडी उनके पास वो है। सो मेरा यही है कि वो आगे बढ़ते रहे अपने लाइफ में। ऑल दी बेस्ट, कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ। हाय नेहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, आई थिंक अपने अपने बेबीज़ को नीचे घुमाने के लिए लेके आए थे और मुझे आप बहुत ही फ्रेंडली लगे, ओपन माइंडेड लगे और आप ही मेरे सबसे फर्स्ट फ्रेंड थे यहाँ पे नेब्यूला में। उससे पहले मैं किसी को नहीं जानती थी और मेरा सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट आपके साथ सब रहा। मोस्टली हम घूमने के लिए गए थे, जब साथ में हम एक्वेरियम गए थे, हम लोग बीच गए थे, साथ में डिनर किया था और आप जिस दिन नेक्स्ट डे जाने वाले थे आप हमारे यहाँ पे डिनर करने के लिए आए, तो मुझे उसके लिए बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे घर पे आए और आपको अगर मैं कुछ थोड़ी बहुत भी हेल्प कर पाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे एक्नॉलेज करते हो, मैं आपको एक्नॉलेज करती हूँ, एक दूसरे को हम दोनों एंकरेज करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब एज अ मॉम हमको एंकरेज रहना चाहिए, तो वन ऑफ द फ्रेंड आप हो जो मुझे हमेशा एंकरेज करके रखती है एंड दैट्स ट्रू, आई रियली मीन इट। और हैप्पी बर्थडे टू यू, इन्जॉय योर डे टू द फुलेस्ट, एकदम मज़े करना, इन्जॉय करना। और ये सरप्राइज़ कैसा लगा भैया का तो बताना ज़रूर। ओके बाय, हैप्पी बर्थडे टू यू। Hi Neha, very very happy birthday, many happy returns of the day. God bless you. Lots of love from all of us.
God bless you. Have a nice day. Great year ahead. Bye. Happy birthday, Mummy. Bet you. Happy birthday to you. To you. May God bless you. ये तो काफी होने वाली है। हम लोग धीरे वाले हैं। हाँ, अभी बाद में आएगा। वाला 6 वाला हो गया। ओह, 3 है। ओह, कमीनो। आएगा तुम लोग का भी बर्थडे आएगा। इस बार आ कम। अबे मारो ना। मैं चुप लगानी मैं तुमको बोल सकता हूं पेट पे मारे के मतलब अरे मारो ना पेट हो गया यार तो दुख रहा है अभी धीरे से समझ आते हो झूठ बोला तुम समझ आओ ये झूठ भाभी जी का मारती है दीदी हो गया 20 for the coming one.